So good afternoon to everyone. Today is the seventh day of this our training program, and now we have with us uh, eminent personality or a dynamic personality, Dr. Prabha Singh. She is a scientist in ICAR, Indian Grassland and Fodder Research Institute, Jhansi. Madam has completed her graduation in 2013 from ND UAT Faizabad. She has completed master degree in plant physiology in 2050, Department of Plant Physiology, Hisar Agriculture University, Hisar, Haryana. She has completed PhD degree in plant physiology in 2021, ICAR Indian Agriculture Research Institute, Pusa campus, New Delhi. And she is familiar with the techniques, means physiological analysis, means photosynthetic estimation, enzymatic study, hormonal study, abiotic stage in plant, then nutrient deficiency and associated studies, and some molecular techniques. So basic biotechnological tools and techniques, then bioinformatics studies, and she is a recipient of different awards: Indian Council of Agriculture Research Fellowship for Junior Research Fellowship and rank 20. Then Indian Council of Agriculture Research Fellowship for Senior Research Fellowship, first rank. Then she has qualified CSIR NET examination and rank was 69. She has qualified Agriculture Scientist Board examination, rank 3. And now she is working at Jhansi. Then she has published various national and international paper in reputed peer-reviewed journal. So with these words, so I kindly request to ma'am, so please deliver the lecture on the said topic. Thank you, sir. Thank you for this kind introduction. Thank you, ma'am. So now you are co-host. You can share your slide, ma'am. Okay, okay. My slides are visible or not? Yes, yes, ma'am. Yes, clearly visible. You are audible clearly. No issue. Okay, okay. So thank you. The topics which were allotted to me were first was photorespiration, second one was translocation of assimilates, then partitioning of assimilates, and then the harvest index. These 4 topics were allotted to me. So first I'll talk about the photorespiration. So as you all know about the photosynthesis, so what happened there is this enzyme, ribulose bisphosphate oxygenase or carboxygenase, which is responsible for photosynthesis. So it was observed by Krotkov. He was the scientist who first discovered photorespiration and also coined the term photorespiration. So Krotkov was working in Canada, and he observed that in light condition the CO2 release was more than the dark condition. So it was very interesting observation, and then he conducted few experiments and found out that something is happening inside the plants. Because of that, the CO2 release in the light is more than the dark. So he coined this phenomena photorespiration, and later it was found that this phenomena is found only in C3 plants. It happens in chlorophyllous tissue of the plants, and 3 organelles are responsible. 3 organelles are engaged in this whole process. First one is the chloroplast, second is the peroxisome, and mitochondria. All these are the questions which are asked in various competitive exams. Like they will ask who coined the term photorespiration, then you can answer Krotkov, and where it happens, whether in C4 plants or C3 plants or CAM plants or all of them. Then you have to pick C3 plants, and it happened in chlorophyllous tissue or non-chlorophyllous tissue. Then you have to answer chlorophyllous tissue. Actually, I am talking about only those kind of points which are very important for competitive exams. Then they will ask in various exams, it being asked that which organelles are involved in photorespiration, whether it is
chloroplast or peroxisome or mitochondria, and they will also give some options like nucleus. Then you have to tick all these three options. And chief metabolite of the photorespiration is glycolate. I'll talk about it later, how it formed. And just like respiration, photorespiration is also an oxidative process, where oxidation of glycolate happens and CO2 is being released. Okay, so next, photorespiration may be also called as oxidative photosynthetic carbon cycle or CO2 photosynthesis. It is a process in plant metabolism which attempts to reduce the consequence of wasteful oxygenation reaction, which by the enzyme rubisco. Or it is a process that leads to only 1,3-PGA being produced in the dark reaction of chloroplast. Actually, generally what happens, two molecules of phosphoglyceric acid formed in normal dark reaction of photosynthesis. But in this case, where photorespiration happens, only one molecule of 3-phosphoglyceric acid forms. So this is what happens whenever oxygen level is higher than the CO2 level. The oxygenase, CO2 and O2 always in competition for rubisco enzyme. So whenever oxygen level is high, the photorespiration pathway will happen more than the C3 carbon fixation. So here what happens, one molecule of phosphoglycolate forms and one molecule of phosphoglyceric acid forms. This phosphoglycolate will further enter into the peroxisome and mitochondria, where it will metabolize and CO2 and ammonia will form. So this is the whole process. Here you can see the green column is chloroplast, where normal photosynthetic process is going on. Whenever oxygen level is high into the atmosphere, the oxygenase component will be more active of rubisco enzyme, and it will form phosphoglycolate. This phosphoglycolate will convert into the glycolate inside the chloroplast. Again, this is asked in various exams, that where glycolate is formed, whether in the chloroplast or peroxisome or mitochondria, then you have to answer glycolate is formed inside the chloroplast. Then this glycolate will transfer into the peroxisome, where it will convert into the glycine. Again, this is a very important question. Where glycine is formed. So glycine is formed inside the peroxisome. This glycine will again enter into the mitochondria, and here serine will form. Glycine will convert into the serine, and then this serine will further divide into the glycerate, hydroxypyruvate and glycerate, and then hydroxy pyruvate and glycerate will again transported into the chloroplast, and CO2 and ammonia is formed inside the mitochondria. This is also very important question, where CO2 is formed in photorespiration, where ammonia is formed. Many people will answer chloroplast, but the correct answer is mitochondria. So inside the mitochondria, ammonia and carbon dioxide is formed, and serine is converted here, and then serine is again transported back to the chloroplast in the form of glycerate. Okay, so photorespiration is depends on light. So light must be there for photorespiration. And second, it's been said that it is a wastage of carbon dioxide, and some people also assume, some scientists also assume, that it protects against the light damage. Actually, what happens whenever a temperature is very high and the radiation is very bright, then the photochemical reaction happens very fast. At that point of time, a lot of energy is being formed which need to be utilized. So this photorespiration helps in the regeneration of ATP. So it is also been said that it protects against the light damage. And photorespiration will happen only when the oxygen level in atmosphere is very high and carbon dioxide is very low. Okay, so this is all about the photorespiration. Very few questions are being asked, as I said. Who discovered photorespiration? Where it happens? What are the organelles involved in the photorespiration? What is the chief metabolite in the photorespiration? And then the question is about photorespiration is also called as oxidative photosynthetic carbon cycle. Okay, then the next question about the pathway is where glycolate formed, where glycine formed, where serine formed, where ammonia and carbon dioxide is being released. And what are the situations which favors photorespiration, like high O2 or low CO2, or low CO2 or high O2, like that. So just keep in mind very key points of the photorespiration.
So as I said, that it has been long intrigued biologists that oxygen has inhibitory effect on the photosynthesis, as shown in the following hypothetical experiment. So oxygen has some inhibitory effect on the photosynthesis, and it is mostly related to the evolution, like what happens. I'll talk about this in following slides. So it is now known that this response to oxygen is due to the competition between oxygen and carbon dioxide on Ribisco enzyme of the Kelvin-Benson cycle. So normally what happens? Normally in photosynthesis, what happens whenever this carbon dioxide reacts with the RUBP, this Ribisco enzyme converts it into the 3-phosphoglyceric acid enzyme and 3-phosphoglyceric acid compound. This is what normally happens when oxygen is less and carbon dioxide is more. But when oxygen in the atmosphere is more, then this oxygen compound will react with RUBP and it will form phosphoglycolate compound and 1-phosphoglyceric acid. And this phosphoglycolate compound will enter into the photorespiration pathway. So it is called as non-productive and wasteful, but as I earlier said, that it's been said that it protects against the light damage. Okay. So what is the evolutionary point of view of photorespiration? It is believed that photorespiration in plants has increased over geologic time. It is a result of increasing levels of oxygen in the atmosphere and the byproduct of photosynthetic organisms themselves. So appearance of C4 plants appears to be an evolutionary mechanism by which photorespiration is suppressed. Actually, initially our Earth was devoid of oxygen. Then oxygen burst happens and oxygen was present in the atmosphere. So initially there were C3 plants and then C4 plants happened because of this evolutionary mechanism. Okay, so in most of our crops are C3 plants like rice, wheat. So many scientists or many international projects are more focusing on how we can convert these C3 plants into the C4 plants, or we can minimize the photorespiratory damage so that we can enhance the photosynthesis in C3 plants. Okay, so it has long been the dream of biologists going on in Erie on rice, where they are trying to minimize the photorespiratory damage in rice. So my next topic is translocation of assimilates, translocation of photoassimilates. So how we can define the translocation of assimilates or translocation of organic solutes? We can define it as the movement of organic food material or solutes in soluble form. Just a sec. My slides are visible or not? Yes, visible, ma'am. Okay. So translocation of organic solutes can be defined as the movement of organic food materials or solutes from one place to another. It is called as translocation of organic solutes. So organic nutrients are being translocated through phloem, and this translocation of organic nutrients from one place to another in plant is called as the movement of organic nutrients from one place to another place inside the plant is called as translocation. Okay, so next comes the how it is being transported from one place to another. So it is being dissolved in the phloem, and this sap is called as phloem sap. So this is a aqueous solution that is mostly sucrose, and it travels from source to sink. As I earlier said, the transport always happen from the higher concentration of soluble form to the lower concentration. First of all, why it is needed to transport the organic solute? Because in plants only leaf manufacture the food. Okay, so for plants the manufacturing of food happens in the leaf, but demand is there in the root, in the fruits or stem or any other plant parts. So
That is why this process is very important, the translocation, and transport will always happen from the higher concentration of soluble form to the lower concentration of soluble form. This higher concentration of soluble form you can call as the supply end or source, and obviously it will be the leaf which is responsible for supply, and the reason of lower concentration is we can also call it as consumption end or sink, and these organs are root or fruit or stem. The only example is where leaf is not the supply in the seed. During seed germination, what happens? The insoluble reserve food material of the seed is converted into the soluble form, and it is supplied to the growing region of the young seedling. So in that case, the supply end is not the leaf. The only exception is seed. So how we can define source and sink? So source is any exporting organ, which is responsible for exporting of reserve food material. Okay, so it may be a storage organ or mature leaves. Mature leaf is very important because this is again a question where they ask they will give you two options like mature leaves or young leaves. So young leaves are always sink and source are only mature leaves. So how we can define sink? Any non-photosynthetic organ that does not produce enough photosynthetic product to support their own growth and development. So it can be root or apical region or immature fruit or developing storage organ. You can name any of them. So next comes the direction of translocation. Generally, when we talk about the translocation from leaf to any other plant part, the translocation will be downward. So leaf are located on the upper side of the plant. So translocation will be in the downward direction. The only exception where upward translocation happens is during the germination of seed, where insoluble reserve food material is transported to the young seedling or transported to the apical meristem region of the young seedling. So in that case, the translocation is upward. And the third is we can call as radial translocation. Radial translocation happens inside the tissue, where from pith to cortex. If you remember the design of vascular bundles, where epidermis is there, then cortex, and then the vascular bundles. So there from vascular bundles to the cortex and then to the epidermis, it is the radial translocation. And then we comes to the pathway of translocation. Pathway, generally phloem is responsible, 100% phloem is responsible for translocation. And why phloem, not xylem? Because for through xylem ascent of sap happens. If you remember transpiration, there xylem is responsible for ascent of sap, and for translocation phloem is responsible. This is again a very important question. It's being asked in many JRF or SRF or even ARS exams. So xylem is preferred because sieve tubes are present in the phloem, where they are connected, they are interconnected, and they have sieve-like structure on the end. So they form a channel. That's why phloem is responsible for translocation. Okay. Okay, so this is again a very important point. Although translocation happens from source to sink, but how we will determine that which source will transport to which sink? So not all sources supply to all sinks in the plants, and there are certain preferentially specific sink which determine the translocation to certain sink. Like first one is the proximity. Proximity of sink to the source is a significant factor. मतलब आप ऐसे मान के चलो कि कोई एक mature leaf है, उसके पास में ही अगर कोई young leaf है और थोड़ा सा दूरी पर कोई young leaf है, तो वो सबसे पहले जो उसका फोटोसिंथेट है वो किसको ट्रांसफर करेगा? जो उसके पास में जो सिंक लीफ है. So when we talk about the factors which affect the translocation, then proximity is a very significant factor, where the translocation will happen from source to the nearest sink. And second is the
development. Like during development, the shift in the sink happen. Like root and shoot are the major sink during the vegetative growth. When in the plant vegetative growth is happening, root and shoot are the major sink. But when plant entered into the reproductive development, then fruit becomes the dominant sink. This is again a very important question. As I presented here, the young leaf is completely dependent on carbohydrate from other sources. So it is a strong sink. If a young leaf is located near a mature leaf, then that mature leaf will translocate its photosynthate to that particular sink. Second, as the leaf grows, it increasingly provides for its own carbohydrate needs. So it is less dependent on the mature leaf, and mature leaf is largely a carbohydrate exporter. Okay, so whenever this question will be asked that which is the source, young leaf or mature leaf or both of them or none of them, then you have to answer mature leaf. Only mature leaf is source, young leaf is sink. Okay, and during vegetative development, root and shoot are the major sink. During reproductive development, grain or fruit is the major sink. Then comes the material transported. मतलब फ्लोएम में होता क्या क्या है, केवल क्या सुक्रोज ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिल करके फ्लोएम सैप बनाते हैं. यहाँ पर शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, these all are present in the phloem sap. The concentration may vary from one species to other species, but largely it is like that. The major component will be sugar, then amino acid, organic acid, and up to some small extent there will be some nutrients also. Then comes the mechanism of phloem transport. The only important question which will be asked from this thing, mechanism of phloem transport, who proposed this mechanism? So first of all, there was a scientist Munch in 1930. He proposed this mechanism, and it was elaborated by Kraft. So I think I write it somewhere. Okay, you can note down here. This mass flow theory or pressure flow hypothesis was given by Munch in 1930, and it was elaborated by Kraft in 1938. So as I explained earlier, source is any exporting organ that produces sugar above and beyond of its own need. भाई जो सोर्स है, जो लीफ है, उसको खुद को भी तो पहले यूटिलाइज करना है. अपना जो भी उसने फोटोसिंथेट प्रोड्यूस किया है उसको खुद के लिए भी यूज करना है. देन इट कैन एक्सपोर्ट टू द अदर ऑर्गन्स. सो एक्सपोर्टिंग रीजन which produces sugar above and beyond of its own need. Sink any area that does not produce enough sugar to meet its own need. That is why it is dependent on source. So this is what happens. Leaf is producing photosynthate by photosynthesis, and then it is transported to the various sink organism, sink part like root, stem, or fruit. So in detail, what happened inside the leaf when photosynthate is manufactured, then this sugar is moved from photosynthetic cell to the companion cell and sieve tube elements, and it is loaded actively, means by use of energy. होता क्या है कि लीफ के अंदर आप मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेट बन गया. अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है. ट्रांसपोर्ट करने से पहले उस फोटोसिंथेट को हमें जो वैस्कुलर बंडल है वहां तक पहुंचाना है. उस वैस्कुलर बंडल में पहुंचाने के बाद उसको वहां पे लोड भी करना है. लोड करने के लिए वो यूज करती है एनर्जी, दैट इज एटीपी. ओके, हाँ, here I mentioned the hypothesis was proposed by Munch in 1930. Okay, so as you can see here, in source cell, sucrose is being loaded in the phloem cells, sieve tube and companion cell actively by use of ATP. When this sucrose is being loaded, then what happens? Solute potential and water potential of the source cell decreases. And when solute potential and water potential of the source cell decreases, then it attracts water from the nearby xylem vessels.
ये आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में और वाटर पोटेंशियल में कि जब भी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो जो नियर बाई में अगर वाटर है तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरह वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो phloem loading leads to the buildup of sugars and it leads to the hypertonic phloem cells, because of which solute potential and water potential into the source cell decreases, and in response water enters from the sieve elements from xylem via osmosis. तो वाटर जाइलम से आपके सोर्स सेल में एंटर कर गया तो यहाँ पर प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, द फ्लोएम टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, एंड ऑन द अदर एंड जहां पे सिंक है उस जगह पर फ्लोएम टर्गर प्रेशर इज वेरी लेस, so this creates a lot of pressure inside the phloem cells. Then what happens in the sink tissue? The phloem unloading happens. This movement will happen via pressure flow from source cell to sink cell, and then inside the sink cell phloem unloading happen, where it is also active process, phloem unloading, by the use of ATP. This sucrose is being transported into the sink cell. Then again solute potential and water potential inside the sink cell decreases, and the water which was entered from the xylem to the phloem, it again goes back into the xylem. So this is how this pressure flow model works, and it was given by Munch. Okay, so this is a very important question, and you can also understand it this way, where water potential and pressure potential and solute potential is being involved. So there is not much need, you can also understand by this way. Okay, so phloem loading, where do solutes come from? Okay, as I said, solutes where it come from the photosynthate, because leaf, inside the leaf photosynthesis is happening. So triose phosphate formed from the photosynthesis during the day is moved from the chloroplast to the cytosol. Okay, at night this compound together with the glucose form the starch, which again converted into the sucrose. These both steps happen in the mesophyll cell, and sucrose then moves from the mesophyll cell via the smallest vein in the leaf to the near sieve element. It is called as short distance pathway. It involves only 2 to 3 cells. Then happens the sieve element loading, where sugar is being transported into the sieve element and companion cell. Sugar become more concentrated in the sieve element and companion cell than the mesophyll cells, and once in the sieve element and companion cell complex, sugar is being transported away from the source tissue, which is called as export, and translocation to the sink tissue is called as long distance transport. I explained it, this whole thing I explained in the pressure flow model. Then happens phloem unloading. So there are 3 steps: sieve element unloading, then short distance transport, and storage and metabolism. Inside the sink tissue this happens, like first of all unloading will happen, means the sugar which is being transported from the source is being unloaded into the sink, and then this sugar is transported to the particular cell where this sugar is needed. So it is a short distance transport. Then this sugar is further metabolized into the sink cell, inside the sink cell. So as I earlier also explained, that material which is being translocated inside the phloem, mainly it is carbohydrate. Sucrose is the most common translocated sugar. This is again an important question, which is the most common translocated sugar. Then it is sugar, and it other than that it also contains amino acid, protein, inorganic ions, and some plant hormones also. What is the rate of translocation? The rate is very rapid. Generally, the average velocity is 1 meter per hour. So you can assume, you can imagine how fast is this. Third point is assimilate partitioning. जो हमने इससे पहले बात की कि अगर डिफरेंट सिंक टिश्यूज प्रेजेंट हैं सोर्स के पास में, तो हाउ विल यू डिटरमाइन which sink source you will prefer over the
other. So the product of carbon assimilation or photosynthesis, such as hydrose, sucrose, or starch, etc., these are produced in the green leaves of the higher plants, and then they are transported to the sink tissue. So at the sink, assimilates are metabolized or utilized for different purpose, and this differential distribution of photoassimilate in different sink of the plant is called as assimilate partitioning. Okay. Inside the sink plant, differential distribution of photoassimilate is called as assimilate partitioning. And this is very important because most of the research work is focused on the assimilate partitioning to increase yield. Because generally the amount of assimilate which is transported to the harvest organ is more desirable for increasing the agricultural productivity. So in that case, what are the factors which are responsible for assimilate partitioning? So first one is the competition among the sink tissues, such as young leaves, stem, root, fruit or seed. तो जो कंपटीशन में ज्यादा स्ट्रांग होगा उसी के पास फोटो असिमुलेट सबसे ज्यादा जाएगा. एंड हाउ विल यू डिफाइन कि कौन सा सिंक में कॉम्पिटिटिवली कौन किसका एडवांटेज ज्यादा है? फॉर दैट यू हैव टू डिटरमाइन द सिंक स्ट्रेंथ, एंड दिस सिंक स्ट्रेंथ इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंक साइज and sink activity. So sink size is the weight of sink tissue, and sink activity is the rate of uptake of assimilate per unit of weight. And for many enzymes are responsible for metabolic utilization and storage of assimilates. So first of all, which sink will get more photoassimilate? It is determined by their strength. And this strength is determined by the sink size and sink activity. मतलब आप ऐसे मान के चलो कि फ्रूट है, मान लो 2-3 फ्रूट है जिनमें कंपटीशन है कि कौन ज्यादा असिमिलेट को अपनी तरफ खींचेगा. तो उसके लिए जिस फ्रूट की एक्टिविटी तेज होगी, जिसमें एंजाइम्स वगैरह प्रॉपर काम कर रहे होंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि उस पर्टिकुलर फ्रूट का साइज बाकी फ्रूट से ज्यादा होगा. अब वहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं वेरियस एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ असिमिलेट्स. तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में, ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा एक्टिविटी करेगा ताकि और ज्यादा असिमिलेट उसके पास आए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिमिलेट पार्टीशनिंग. सेकेंड इज द डिमांड, कि सिंक में डिमांड है कि नहीं है, and it is directly proportional to the rate of photosynthesis also. अगर सिंक कंटिन्यूअसली फोटो असिमुलेट को यूज कर रहा है और कंटिन्यूअसली अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, then rate of photosynthesis is also directly proportional to the sink demand. So that way assimilate is more to that particular sink. Third one is the long distance signal such as turgor pressure. It is a physical signal, and various plant growth regulators which are chemical signals. So these signals are also important. Just some hormones like auxin, gibberellins and cytokinins are also transported by this translocation, and they also govern the assimilate partitioning. And the fourth important point is plasmodesmata. So as I said, sieve tubes are interconnected to each other by their perforated end. And if these pores or sieve pores are blocked by callose deposition, then it will further hamper the translocation. So plasmodesmatal connections and the sieve pores which are situated at the end of sieve tubes, it is also very important for assimilate partitioning and smooth translocation of photoassimilates. So fourth point was harvest index. The only question which will be asked is what is the definition.
what is the formula of harvest index. So you can define it as economic yield divided by biological yield into 100. Sometimes they will give this formula also, dry mass of economic yield divided by dry mass of biological yield. So that's it. That was my lecture. If any query is there, you can ask. Topic is open for discussion. If the participant having any queries or some question regarding this topic, so please you share your views or ask your doubts to madam. So you can unmute yourself and ask the question. Otherwise, you can write a message and send it to in chat box. So I will read and communicate to madam. Madam, hello. One question in chat box. Example of radial translation in plant. Example of radial translocation, as I said, it happens from pith to cortex. So medullary rays. Okay. अगर आपको याद हो कि जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं किसी भी पार्ट का, तो वहां पर मतलब प्लांट टिश्यू का, तो वहां पर सबसे सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, देन कॉर्टेक्स होता है, देन एपिडर्मिस होती है. तो रेडियल ट्रांसलोकेशन का जो एग्जांपल है वो पिथ टू कॉर्टेक्स है, मेडुलरी रेज यू कैन say. So this is the answer. There is another question. What is mean by sieve elements? Sieve elements. Sieve elements, if you are familiar with phloem structure, then there are many parts. One is sieve elements and companion cell. Then phloem parenchyma and phloem sclerenchyma is also there. So these sieve elements are responsible for translocation. These are also called as sieve tubes. Okay, तो sieve tubes आप ऐसा समझ लो जैसे कि एक पाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप, लेकिन मतलब पाइप के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनके एंड पर आप एक मतलब अगर उसका एंड आप ऐसा समझो कि बंद है, तो लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद भी हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जो पाइप के छोटे छोटे पार्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिनके एंड पर पोर्स हैं, तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज sieve element or sieve tube. It is a part of phloem and it is responsible for translocation. Mainly it is responsible, and with sieve element, companion cells are also there. So is there any question? So you can unmute yourself also. You can communicate also. There is no issue. See, this is an important lecture. All the lectures are very important for preparation of NET ARS examination, and that resource person already cracked all type of the examination, NET ARS examination, GRF, SRF. So you can ask to them, feel free. You are a beginner, so which type of the books are refer? हाँ, आप ये भी पूछ सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है. एक्चुअली जो बच्चे फिजियोलॉजी मतलब बेसिक साइंस से तैयारी कर रहे हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप से जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पूछ सकते हैं
तो एक्चुअली हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा रहता है कि कौन सी चीजें पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। कई बार हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किसी एक टॉपिक को इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मुझसे इस टॉपिक के बारे में ही पूछो, आप मुझसे इन जनरल भी प्रिपरेशन के बारे में पूछ सकते हो कि कैसे तैयारी करनी है। तो अगर अगर किसी को इंटरेस्ट है इस चीज में तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। Please, madam, share your experience. I think so. It will be inspiration to these beginners, and they are the budding scientists. ओके, सो फर्स्ट आई विल से, अगर कोई आप में से कोई भी जीआरएफ की तैयारी कर रहा है जो कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद होता है, जो अगर यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप जैसे कोई भी आपको क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको ध्यान देते समय अपने साथ साथ एक रजिस्टर जरूर बनाएं जिसमें टॉपिक वाइज आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि किस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जीआरएफ पूरा ऑब्जेक्टिव है, वहां पे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको जो नोट्स टीचर से मिले बस आप उसी पे डिपेंडेंट हो, आप अपना भी एक नोटबुक साथ के साथ प्रिपेयर करो। और उसमें जैसे कि आपने जो बाइंडिंग वाली जो नोटबुक होती है जिसमें साइड में बाइंडिंग होती है, तो वहां पे आप कर सकते हो कि सबसे पहले आपने एक टॉपिक का नाम रखा और आपने उस टॉपिक को पढ़ा और आप थोड़ा सा एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको भी साथ के साथ अटेम्प्ट करते रहो और देखो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं और उसको आप पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ। इस तरीके से जब आप हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के साथ काम करोगे तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपके पास ऐसे 5-6 रजिस्टर तैयार हो जाएंगे जिसमें आपने एमसीक्यूज भर रखे हैं। और एमसीक्यूज या कॉन्सेप्ट, मतलब एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपने तरीके से समझने के लिए, जिसको आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिसको आप किसी चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि खुद के नोट्स तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी तैयारी में, आपके खुद के नोट्स जरूर होने चाहिए। ये चीज आपको जेआरएफ में हेल्प करेगी और एसआरएफ में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी एसआरएफ का एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया। आपको कोई भी एग्जाम को कहीं पर भी एडमिशन लेना है फॉर पीएचडी ऑल्सो, तो वहां पर भी अभी ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो ज्यादातर कोशिश ये करें कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़ें तो अपना नोट्स भी साथ के साथ बनाएं और बुलेट पॉइंट्स में ये देखें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगातार अटेम्प्ट करते रहें। अगर आपका एआरएस में इंटरेस्ट है तो एआरएस के लिए फिर फर्दर एक दूसरी तैयारी है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होती है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, अभी तो जेआरएफ एसआरएफ की बात हो रही है। और बहुत फोकस पढ़ने की कोशिश करें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत डीप पढ़ने लग गए और 1-2 टॉपिक को ज्यादा पढ़ा, कुछ टॉपिक को कम पढ़ा। जो भी पढ़ें उसको 3 से 4 बार रिवाइज जरूर करें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक अच्छा सर्कल बनाएं, मतलब अपने साथ जो बच्चे ज्यादा अकेले पढ़ते हैं उनका सक्सेस जो रेट है वो थोड़ा कम होता है। अच्छे बच्चे ज्यादा आगे तभी जा सकते हैं जब वो 3-4 बच्चे एक साथ पढ़ें। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो 2-4 बच्चे साथ में पढ़ें। जैसे आप मान लीजिए कि प्लांट बायोटेक ग्रुप से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने साथ के दोस्त का या कोई भी है जो उस ग्रुप से तैयारी करना चाहता है तो सारे मिलके कर लें। वैसे ही अगर कोई एग्रोनॉमी से करना चाहता है, कोई प्लांट ब्रीडिंग से करना चाहता है, तो मिल के तैयारी करें, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा हमारे जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप है, इसमें फिजियोलॉजी में आपको केवल फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी होगी, आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, बायोटेक भी पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, जेनेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और जनरल एग्रीकल्चर। तो जो भी किताबें लें वो 2-4 किताबें ही ले करके उनको बार बार रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अभी तो बहुत सारा मटेरियल है जो आपको नेट वगैरह पे भी मिल सकता है, बहुत सारे लेक्चर्स भी, बहुत सारे हमारे टाइम पे ऐसे यूट्यूब चैनल्स या नहीं होते थे, अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी कई लोग चलाते हैं। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप उनको रिफर कर सकते हो, लेकिन अपना खुद का नोट्स बनाना इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो जरूर करें। तो ये मेरी तरफ से सलाह रहेगी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के लिए। Yes, madam. This is very good tips for the student or the participant, those who are interested in this JRF NET examination. So ARS examination, it's very difficult, but how to prepare, that is very important. But that type of information you can give them also. Most of the participant also preparing the ARS NET, ARS also. Okay. For ARS मेरा जो खुद का फंडा था वो यही था कि
मेरे साथ सबसे पहले ये हुआ था कि कोई भी गाइड करने वाला नहीं था कि यार इसकी तैयारी कैसे करें। द ओनली थिंग आई वॉज वेरी फेमिलियर कि हाँ मुझे आंसर राइटिंग करना अच्छा आता था। तो वहां पर आपको एआरएस में किसी भी, जैसे कि आपको पूरा सिलेबस मिलता है, यूनिट्स मिलती हैं कि जैसे हमारा प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था तो उसमें 10 यूनिट थी, उसकी 6 यूनिट कोर फिजियोलॉजी की थी और 6 यूनिट अप्लाइड थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ यूनिट्स पे कम ध्यान देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो सिलेबस है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस आपको ऑलरेडी मिला हुआ होता है, उसमें दिया होता है कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है। आपको नहीं पता कि किस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि कोर फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन ज्यादा है। किसी भी सब्जेक्ट में कोर से क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है अप्लाइड से पूछ लें। तो आप अगर 10 यूनिट में सिलेबस है तो 10 की 10 यूनिट को ध्यान देना है। कोशिश ये करनी है कि हर एक टॉपिक का, जैसे मान लीजिए कि यही हम पढ़ रहे थे ट्रांसलोकेशन ऑफ असिमिलेट्स, तो अगर ये टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ असिमिलेट्स या फोटो रेस्पिरेशन, तो आप इसको एक पन्ने में कैसे लिखेंगे? तो वो आंसर ऑलरेडी, अब यहाँ पर भी वही बात है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, यूनिट वाइज नोट्स बनाने जरूरी है। अगर 10 यूनिट है तो आपके पास 10 रजिस्टर होने चाहिए। हर एक रजिस्टर में उस यूनिट में मान लीजिए कि उन्होंने 15-20 टॉपिक बताए हैं, तो हर टॉपिक को आप एक पन्ने में कैसे लिखेंगे? एआरएस का जो क्वेश्चन आता है उसका जो आंसर लिखना होता है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, एआरएस में एक्चुअली 40 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज और ये सब आते हैं। फिर 5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिर 10 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 पन्ने मिलते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना मिलता है। तो वो 1 पन्ने की तैयारी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी कि आप पहले से ही हर एक टॉपिक को आप एक पेज में क्या लिखना चाहोगे उस टॉपिक पे, वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम ये लिख लेंगे, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब याद नहीं रहता है कि कौन सा वाला पॉइंट लिखना था, कौन सा नहीं लिखना था। कई बार जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो दिमाग में आता ही नहीं है और कोई रद्दी सा पॉइंट हम लिख के आ जाते हैं। तो इसीलिए हर एक टॉपिक का जो एक मॉडल आंसर है वो आपको पहले से ही बना के रखना है कि हम अगर ये क्वेश्चन आया तो हम ये लिखेंगे। और क्वेश्चन आता वही है, कोई भी एग्जाम अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता, वो घुमा फिरा के पूछते हैं लेकिन पूछेंगे सिलेबस से ही। तो अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर रखी है, हर एक टॉपिक की रेफरेंस बुक पढ़िए। जैसे कि हमारे में एक टॉपिक क्लाइमेट का भी था। अब क्लाइमेट फिजियोलॉजिस्ट को नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब मेन कोर फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लाइमेट का एक पूरी यूनिट थी। तो मैंने मेरी एक इन्वायरमेंटल साइंस की फ्रेंड थी, उससे जाकर के डिस्कस किया, उसको अपने सारे टॉपिक दिखाए कि भाई ये टॉपिक है। उसने मुझे सजेस्ट की 2-4 किताबें, उसने मुझे दे भी दी और फिर उससे मैंने वो अपने नोट्स बना लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे 2 क्वेश्चन आए थे क्लाइमेट से, एक 5 नंबर में आया था और एक 10 नंबर में आया था। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। वहां पर आपको अपना आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे ये आप पहले से तैयार करके रखिए। एक पन्ने का 2 पन्ना हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आया है तो हम क्या लिखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ज्यादा लिखने पे फोकस मत करिए। मतलब एक पन्ने में आपको लिखने को मिला है, अब आप पूरा लिखे ही जा रहे हैं। अब आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब ज्यादा लिखा होता है ना तो पढ़ने में और चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, एग्जामिनर भी चिढ़ जाता है। तो वहां कभी भी कोई भी आपका रिटन एग्जाम हो तो फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टेबल बना दो, फ्लो डायग्राम बना दो, कोई ग्राफ बना दो, कोई पिक्चर बना दो, मतलब पिक्चर आई मीन टू से प्लांट से रिलेटेड, हाँ कोई डायग्राम बना दो। लेकिन लिखो बुलेट पॉइंट्स में, शॉर्ट में, और ये सारी चीजें ज्यादा करो ताकि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में ज्यादा चिढ़ ना हो और वो थोड़ा सा हैप्पी मूड में आपकी कॉपी चेक करे। और किसी भी आंसर को लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि वो क्वेश्चन का जो एक इंट्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में वो। फिर उस आंसर की एक बॉडी होती है, उस बॉडी में आप कोई चार्ट, फ्लो डायग्राम, टेबल या कोई डायग्राम ऐसे डाल सकते हो। फिर उस आंसर का एक कंक्लूजन होता है। तो किसी भी आंसर को हमेशा ये 3 पार्ट में बांट के रखिए। जैसे उन्होंने किसी चीज की डेफिनेशन पूछी, मान लीजिए डेफिनेशन पूछी, फिर कहा इसकी मैकेनिज्म क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की या कोई भी चीज जो पूछ रहा है उसका इंपॉर्टेंस के बारे में 1-2 लाइन लिख के फिर उसकी बॉडी पर आइए। बॉडी में आपने टेबल वगैरह बना दी और अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखा और फिर लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया आंसर को। तो ये सबसे जरूरी है। और तीसरी बात है प्रैक्टिस,
क्योंकि बहुत सारे लोगों का ARS एग्जाम छूट जाता है, ये बहुत ज्यादा होता है। किसी का 10 नंबर का छूट गया, किसी के 5 नंबर के 2-4 क्वेश्चन छूट गए, ये सब होता है। तो जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है उनका तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं है लिखने में, वो बार बार प्रैक्टिस करें कि आप वो 3 घंटे के अंदर 10 नंबर के 6 क्वेश्चन, 5 नंबर के 20 क्वेश्चन और फिर MCQ इतने अटेम्प्ट भी कर पाओगे कि नहीं। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हैंड राइटिंग भी सही रहे। मतलब ऐसा ना हो कि आपने जल्दी जल्दी तो लिख लिया लेकिन लिखा क्या ये नहीं समझ आ रहा है। तो हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है, साफ साफ लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा टेबल, फ्लो डायग्राम ये सब आपको इंक्लूड करने। अगर आपने हर क्वेश्चन में ये सारी चीजें इंक्लूड की तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने तय हैं, भले ही आप लिखो कम। और साफ सुथरा लिखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। गलती से कई बार बच्चे क्वेश्चन छोड़, गलती क्या होती है मतलब कवर ही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे लिखते हैं तो वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको स्पीड पे बहुत ध्यान देना है। और सबसे बड़ी गलती जो होती है, ये सारा कुछ करने के बाद जब ARS का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो कई बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे साथ के भी मेरे कलीग्स ने ऐसा किया है। कुछ लोगों का काम चल जाता है पर ज्यादातर लोगों के साथ गलती होती है कि वो 10 नंबर का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो 10 नंबर के 6 क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर लें और 5 नंबर के 20 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। उससे क्या होता है कि वो 10 क्वेश्चन में उनका टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है और ये वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 नंबर में जो क्वेश्चन आया है वो ही घुमा फिरा के 10 नंबर में आ जाता है। तो 10 नंबर में फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा इस चीज को करना है कि एक तरफ से ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक तरफ से पहले MCQ करिए, फिर 5 नंबर के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर 10 नंबर के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उल्टा मत करिए, पहले 10 वाले मत करिएगा क्योंकि उससे गड़बड़ी होती है। हमेशा पहले 5 नंबर के अटेम्प्ट करके फिर 10 नंबर पे जाइए। और लिखते समय ये ध्यान रखिए कि कई बार पन्ने चिपके होते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में ही आंसर है, उसी में लिखना है। सेम मतलब एक ही आपको मिलेगी कॉपी, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर लिखना है। तो मान लीजिए कि आपने कई बार पन्ने चिपके रह जाते हैं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा तीसरा छूट गया, सीधे चौथे पन्ने पे आ गए। तो लिखते समय ध्यान दीजिए कि हाँ हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन किया है, अगले पन्ने पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए लिखना है कि हाँ अच्छा हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यही सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यही है कि आप अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करें। उससे जब आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि वो आपका खुद का नोट्स है, आपने मेहनत करके बनाया है, तो वो वैसे ही आपके दिमाग में होता है कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। और नोट्स बनाते समय काफी मेहनत लगती है, हम समझ समझ के बनाते हैं बिल्कुल। तो जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा याद करने की और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही सब याद रहेगा। तो जो भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, चाहे BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे PhD हो, PhD में जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने BSc MSc के नोट्स बनाए हैं तो आपको PhD में केवल एग्जाम ही लिखने हैं। तो BSc MSc में स्पेशली जो बच्चे BSc में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी रहता है। उस समय आपने कोई भी कोर्स पढ़ा, उसमें जो भी टॉपिक है उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स जरूर तैयार करें। एक रेफरेंस बुक ले लें, रेफरेंस बुक से थोड़ा सा उसी टॉपिक को पढ़ते हुए। तो क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर भी पूछी ही जाती है हर एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो ARS के इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं जनरल एग्रीकल्चर। तो जनरल एग्रीकल्चर का अपना खुद का नोट्स होना बहुत जरूरी है। मैंने भी बनाया था और मुझे वो लास्ट तक उसने मुझे बहुत हेल्प की है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, ma'am. Thank you for sharing your views. And some participants are asking question to you also. Mr. Wahid Hussain, if you have any queries, so please unmute yourself and ask. Wahid. Hello. Hello. Wahid Hussain. Yes, sir. हाँ, please ask. Madam, जी भाई what बताइए। the mechanism of ion transport across the membrane? Okay, that is a different thing. Mechanism of ion transport, there you have to go for symport and antiport. That topic is covered in mineral nutrition. If you have any lecture regarding mineral nutrition, and I can suggest you a book for that. Hello, Vahid. Okay, sir.
ये मिनरल, ये जो आयन के ट्रांसपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आता है। और वहां पर इट डिपेंड्स कि किस तरीके का आयन है, उस हिसाब से उसमें सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता है। ये आप अगर तेज का बुक आपके पास होगा फिजियोलॉजी में, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हो। वहां पे उन्होंने डिटेल में हर, मैडम, हाँ, तेज एंड जिगर में उन्होंने बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाया है। एक्चुअली दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट द आयन ट्रांसपोर्ट। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके भाई। Another participant, Mr. Vaibhav, please unmute yourself and ask. Yes, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all. Good afternoon. Ma'am, will you please enlighten what are the other opportunity after PhD other than ARS? अदर देन ARS, एक्चुअली एग्रीकल्चर में हमारे, जैसे कि एग्रीकल्चर में हर स्टेट में ये जॉब आती है। आपके यहाँ भी आती होगी शायद, महाराष्ट्र में, हमारे इधर आती है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, है ना। इसके अलावा बैंक के सेक्टर में भी कई बच्चे जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग जाते हैं, स्पेशली ब्रीडर्स और सीड टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है प्राइवेट सेक्टर में। बहुत सारी सीड कंपनीज बहुत ईगर होते हैं सीड टेक्नोलॉजिस्ट को लेने के लिए, बहुत अच्छे पैकेज पे। ब्रीडर्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, इवन मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट की भी काफी ज्यादा डिमांड रहती है प्राइवेट सेक्टर में। और अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर बैंकिंग सेक्टर है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और जनरल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह की भी काफी पोस्ट आती हैं। इसके अलावा जनरल यूनिवर्सिटीज में भी जैसे हमारे यूपी में ऐसा होता है, यूपी HESC एक बोर्ड है, यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल। तो ये जनरल यूनिवर्सिटीज जो है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डिवीजन होता है, तो वो उसके लिए भी रिक्रूटमेंट करते हैं। और उसके लिए रिक्वायरमेंट यही होती है कि एग्रीकल्चर ही आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आई थिंक सेम थिंग वहां पे भी होती होगी महाराष्ट्र में, कि जो जनरल यूनिवर्सिटीज है वहां पे जो एग्रीकल्चर डिवीजन है, वहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरीके से रिक्रूटमेंट हो जाती है। और अगर आप इन सब में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में इंटरेस्टेड हो, तो आई हाईली रिकमेंड IFS अभी भी बहुत आसान है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें आप कर सकते हो तैयारी अगर आपको उस फील्ड में जाना है। और इसके अलावा अगर एकेडमिक्स में ही केवल इंटरेस्ट है, तो आप MSc PhD करके फॉरेन जा सकते हो। आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरीके से। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू। Is there any question? So if you have any question, then you can ask later also. So we can communicate, madam, later. So I kindly request to you, madam. So please send me the list of the book. So which book is good for this particular topics, and Okay, sir. how to prepare. So in briefly, if you send me, so then accordingly I will send in the group of the student participants. Okay, sure. I'll Definitely, share the list of book yes, and yes, it will be helpful to preparation. So thank you, sir. Thank you, ma'am, for accepted our invitation and deliver very nice lecture. And it will be fruitful outcome in coming future. So most of the peoples are preparing for this examination, and definitely they will crack the examination and will become a scientist in good institute. thank you, sir. Best wishes to all participants. May they all excel in their fields. So Yes, thank you we so are much. we are expecting another lecture of from your side. So please give your date and time. So accordingly, after finish this lecture, I will talk with you and decide your lecture again. Okay, sir. Okay, sir. Yes, yes. So thank you very much. Thank you, you sir. very much again. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. So shall we conclude, ma'am? Yes, sir. Sure. Okay, ma'am. Okay, madam. Have a good day. Good day to all, and my best wishes. Thank you. Thank you. So there is one announcement to all participants. So please join the meeting at 4 p.m. So one more another lecture we will conduct from the ICAR scientist. So accordingly, I will send the link in our groups.
So please join the meeting. These lectures are very important to all people. Okay. Thank you. Thank you.